Professor Rajeshwar Singh Chandel shares how natural farming is proving to be a blessing in disguise for farmers in an exclusive interview with Himachal Tonight. ताकि लिए प्राकृतिक खेती 2018 के बाद लोगों ने शब्द सुनना शुरू किया। फर्क सिर्फ इतना है, हेतु एक जैसा है, पर्यावरण को बचाना, जमीन को बचाना, पानी को बचाना और बिना एग्रो केमिकल से प्रोड्यूस करना। तो यहाँ हम किसान को बाहरी आदान से कट कर रहे हैं। ही शुड नॉट बाई एनीथिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल मार्केट। बस इतना फर्क है। सर, अगर हम सेहत की बात करें तो आपकी नेचुरल फार्मिंग कितना सेहत के लिए सिद्ध होगी, बेनिफिशियल रहेगी अगर हम बात करें? ये तो एक आम सोच से भी आना चाहिए। जब हम 1960 से पहले भी बिना केमिकल से उगाते थे तो लोगों की सेहत कैसी थी, और आज जब दोबारा उगाएंगे तो सेहत पे हम दोबारा कहाँ लौटेंगे। पहाड़ के व्यक्ति को भी वही बीमारियां जो प्लेन के व्यक्ति को हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो आई है। तो इसलिए प्राकृतिक रूप से जब उगाएंगे तो हम शुद्ध उगाएंगे भी और खाएंगे खिलाएंगे भी। So when it comes to natural farming, what are the initiatives that your department is taking to promote natural farming among the people? Yes, as of now we have nearing 1.5 lakh farmers who have shed away with the fertilizers and pesticides, not on complete land but on partial piece of land. तो ये बहुत से इसके लिए प्रयास सरकार ने की है, योजना बनाई, प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना। उसके माध्यम से अलग अलग इनिशिएटिव चले, ट्रेनिंग का चला, सेंसिटाइजेशन हुआ, एक्सपोजर हुआ और उस पर काम शुरू कराया गया। Sir, currently if we talk about the farmers, how many percent farmers do you think you have covered in this scheme? You see, nearly we are now very near to touching the target of 1.5 lakhs, which has been fixed for the current year. Still, we are left with 4 more months to do with, and they are doing it on around 9,000 hectare of area. And so, can you please give us a nutshell of the scheme? Yeah. You see, this is a specific scheme targeting to transform the farmer into natural farming practices. So you see, when we talk of the natural farming, so it means the farmer will not buy anything from the external market, whether they are pesticides or fertilizers or growth regulator or fertilizer, any kind of the agrochemicals which the farmers they apply, because you see this is a farming based farming economy based state. So we have been able to do it on 10,000, around 9,000 hectare of land, and the target is to convert 12,000 hectare in this current year, financial year. Sir, there is a misconception among the masses that natural farming and organic farming is one and the same. So would you like to please elaborate on these two? Yes. Objectives are, as I have already made it clear, that objectives are same. पर्यावरण को बचाना, खेती को बचाना, सस्टेन करना खेती को. But when you talk of the organic farming, it has enhanced the cost of cultivation of the farmers. Farmers have to buy costly organic inputs from the market. Wherever in case of natural farming, he prepares all kind of the inputs which are required for the farming. It's only locally sourced inputs. वो स्थानीय पेड़ पौधों से और भारत की नस्ल की किसी भी गाय के गोबर और गोमूत्र से सारे आदान बनाता है और सक्सेसफुली खेती कर रहा है. Sir, when it comes to preserve the interest of consumers, it has been seen many people are robbed by calling chemical-based products as organic or natural farming produce. So, what do you think can be done to safeguard their interest? Yes, because we are equally concerned with the interest of the consumer, because finally this whole framework, it starts from the farm and it goes up to the plate of the consumer. So consumer interest is equally important. So we have been working on the two basic principles: transparency, where farmers should get the genuine price or true cost. So wherever we are taking care of this
interest into consideration, we are equally concerned with the interest of the consumer, that he should get the genuine price. So on that front, we are working on the traceability also, so that with one click of the mouse, the consumer can understand where from his produce has come. So, what are your policies that you think will safeguard their interest? May that be of a consumer or a producer? Yeah. We have a now framed policy with us. The different marketing channels now we are proposing and we have implemented. All are working on the principle of the transparency and traceability. So farmer, whether he sells it from his own farm or he comes to the consumer through farmer producer companies or through local outlets, all sources will provide the traceability to the consumers. So, currently, how many farmers do you have registered with you who are actually selling their product like that? If you want to have the exact number, then these are the 1,46,438 farmers. So this is the exact number. So earlier I was talking about nearing 1.5 lakh. But you know, all of them are not the may not have the market surplus. But in the state, around 40,000 farmers, they have the market surplus. Others are doing it for their family purposes. Sir, are there any other schemes that are providing financial assistance to people who want to opt for such kind of farming? Yes, we must be thankful to the government of Himachal Pradesh, specifically the Honorable Chief Minister, who is monitoring this scheme after every 6 months, and the Secretary Agriculture, State Project Directors, they are the continuous feedback from the scheme. The farmers who are interested to transform into natural farming, they get 50% of the cost of the, if he wants to buy a indigenous cow, or 25,000 or 50%, which is the lesser. He will be provided with the rupees 8,500 for cow lining, फर्श पक्का करने के लिए, ताकि वो गुंतर इकट्ठा कर सके. उसको 3 ड्रम जिसमें अलग अलग आदान बनते हैं, ये फॉर्मुलेशंस बनती हैं, उसको 2250 रुपये दिया जाता है. अगर गांव में किसी को संसाधन भंडार खोलना है, बिकॉज एवरीबॉडी मे नॉट हैव ए काउ, सो वेयर फ्रॉम ही विल गेट द इनपुट्स. सो वी हैव ए प्लान कि वो संसाधन भंडार कोई इन सब इनपुट्स को बनाए, एक स्टेट लेवल पे प्राइस है उस पे उसको बेचे, उसको 10,000 का इसको असिस्टेंस देते हैं. Sir, anything else do you think which is deemed fit for our readers or viewers to know about? Yes, your cooperation from It's the only media. fair. Here my request would be, if media would understand the value of this program, I think we would be better able to outreach the people. Even you see, we have reached to the highest village of the world, Hikim, where our farmer is doing very good in natural farming. You see, it's not only farmer who is involved in farming. हमने अभी स्कूल चिल्ड्रन को के पास जाना शुरू किया, थ्रू स्कूल्स उनको सेंसिटाइज करना शुरू किया. आने वाले टाइम में हमारी एक प्लान है कि जितना भी हमारे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेसी है, साइंटिस्ट है, हम उनके भी उनका एक कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं नियर फ्यूचर में. ऐसे अलग अलग मासीज के पास हम जा रहे हैं. अभी एक स्टेट लेवल पे हम कैसे मीडिया के कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीडिया आउटरीच प्रोग्राम हम कर रहे हैं, लोकल लेवल पे मीडिया को हम फील्ड में ले जाते हैं. तो ये डिफरेंट प्रोग्राम्स नए चलाएंगे. Sir, how easy is it to access you people when it comes to adapt for natural or organic farming? Because most of the time it's believed government machinery is very difficult to deal with. I think this is the most appropriate question you have asked. किसान को कैसे सबसे नीरस कौन मिलेगा? सिर्फ ये स्कीम ऐसी है जहाँ हर ऑफिशियल के पास जिम्मेवारी है. ब्लॉक लेवल पे हमारे 3 अधिकारी काम करते हैं. एक को ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर BTM कहते हैं, दूसरे को असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर ATM कहते हैं. तीनों के पास इक्वली पंचायत डिवाइडेड है और एवरेज 10 से 15-18 पंचायत एक अधिकारी के पास आती है. तो हर घर में जहाँ प्राकृतिक खेती हो रही है, ये अधिकारी हमारे उनके पास जाते हैं. तो नियरेस्ट अगर ब्लॉक लेवल पे कॉन्टैक्ट करना है तो ब्लॉक स्तर पे BTM और ATM, ये बड़ा प्रोमिनेंट नाम हो चुका है.
और जिला स्तर पर हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर आत्मा और 2 डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर आत्मा परियोजना, ये पूरा टाइम इस काम को देखते हैं। जो भी कृषि विभाग का कार्यालय होगा वहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट डायरेक्टर और डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर मिलेंगे। थैंक यू सर।